Hello friends, welcome to Swarn Biology. This is Dr. Swarnima Mishra and today we are going to study about the reproduction in sponges. This video is the overview about the reproduction in sponges, and our upcoming videos will cover the reproduction of sponges in detail. Now let's have some overview about the reproduction in sponges. So this reproduction takes place by two types, that is the sexual reproduction and the asexual reproduction. तो sponges में जो reproduction पाए जाते हैं वो दो तरह का देखने को मिलते हैं, sexual reproduction और asexual reproduction. Now this sexual reproduction, it takes place by cross fertilization. So this arises in our mind that as we all know that the sponges or the poriferans, they are the hermaphrodite. So why do they perform the cross fertilization? क्योंकि हमने ये पढ़ा है और ये देखने में मिलता है कि जो sponges हैं, जो poriferans हैं, वो hermaphrodite हैं. मेल एंड द फीमेल गैमीट जो है सेम बॉडी में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है. Now why the sexual reproduction takes place in the sponges or the poriferans? The reason is that the male and the female gamete which are present in the sponge's body, जो male और female gamete जो sponge's body में पाए जाते हैं, they have the different time of their maturation. Like the time of maturation of the male gamete, it differ from the female gamete. That means कि जो maturation होता है male और female gamete का, वो different times पे होता है, और ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि male gamete जल्दी mature हो जाते हैं than the female gamete. So this condition is also known as the protandrous. Why? Because the male gamete, it matures earlier than the female gamete. So the type of fertilization which takes place in the sponges during sexual reproduction is the cross fertilization. Now this cross fertilization takes place in situ, means the inside the body of an organism or the sponges. Generally what happens is that, suppose this is the body of one sponge, say this is the one sponge, and this sponge, it consists of, as we all know, that it has the male gamete and the female gamete. Suppose this is the female gamete and this is the male gamete. Now another, as we all know that the male gamete, it matures earlier than the female gamete, so it gets matured, and through the water current this male gamete, it moves towards the body of another sponges. For example, this is the second sponge. So this male gamete, through ostia, it enters into the body of the another sponge, and there it fertilizes with the female gamete, and the fertilization is known as the cross fertilization. So this is how the fertilization takes place in the sponges, as it takes place inside the body of the another organism. So this type of fertilization is the internal fertilization or the in situ fertilization. It does not take place at the water bodies, that it is not external fertilization does not occur. That means कि जो मेल गैमीट है वो वाटर करंट के थ्रू जाता है अनदर स्पॉन्ज की बॉडी में थ्रू ऑस्टिया, और वहाँ पे जाके ये फर्टिलाइज करता है फीमेल ओवम से, फीमेल गैमीट से, विच इज़ ओवम, और गैमीट से फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है. इसी को हम इन सीटू फर्टिलाइजेशन कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो इनसाइड द बॉडी, मतलब दूसरे स्पॉन्ज के बॉडी के अंदर हो रहा है, कहीं बाहर वाटर बॉडीज में या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन स्पॉन्जेस में देखने को नहीं मिलता. So this type of fertilization is the in situ or internal fertilization, and this is how the cross fertilization in the sponges or the poriferan takes place. Now
after the fertilization there is a development of larva within the maternal sponge. After that what happens कि larva का development होता है within the maternal sponge. And the types of larva which has been seen is the two types of larva could be seen, that is the amphiblastula and the parenchyma. And the example of amphiblastula is the scypha, and the parenchyma में we can see examples as calcarea, hexaactinellata and most sponges, demospongia and most demospongia. So फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा का डेवलपमेंट होता है. जैसे ही ओवम फर्टिलाइज हो जाता है वो फर्टिलाइज्ड ओवम कन्वर्ट हो जाता है इनटू लार्वा में. और ज़्यादातर यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ लार्वा देखने को मिलते हैं, एम्फीब्लास्ट्यूला जिसका एग्जाम्पल है स्काइफा एंड पैरेनकाइम्यूला जिसके एग्जाम्पल हैं कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनेलेटा एंड मोस्ट डीमोस्पंजिया. सो दिस इज ऑल ओवरव्यू अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस. Then we come to the asexual reproduction in sponges. Asexual reproduction takes place by the four major processes as we can see here, like by budding, by fission, formation of reduction bodies and formation of gametes. तो asexual reproduction majorly 4 types में देखने को मिलता है. 4 types से होता है. पहला हमारा है by budding process से, दूसरा है by fission से, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल्स. सो ऑल दीज टाइप्स वी विल स्टडी इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस, एंड वी विल कवर the sexual reproduction in detail and the asexual reproduction in detail in our upcoming series of reproduction in sponges. So till then, keep watching and keep studying. Thank you so much.